From Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of culture, tradition, languages and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides in the path of development. Hello, I'm your host Skyrim Zimik, and today in our episode of My India, we bring you some of the stories that will give a glimpse of our country's diversity. Today we will take you to witness the celebration of one of the most auspicious occasions of Hindus. Popularly known as Makar Sankranti, the festival marks the beginning of harvest season and the end of cold and dry days. Though celebrated with different names and ways across various parts of the country, the zeal and enthusiasm of the occasion remains the same everywhere. India got soaked in festive fever as it observed Makar Sankranti, the most ancient Hindu festival dedicated to God's sun. During this period, sun ends its southward journey and starts moving towards northwards. The festival also marks the first day of sun's transit into the zodiac sign Makar or Capricorn. Though observed as harvest festival, its cultural significance as well as way of celebration varies across the country. In cities lining the holy rivers, especially Ganges, millions of Hindus brave the cold temperatures and begin the day by taking a dip in the holy waters. Their gesture is believed to have the power to wash away all the sins. This year, owing to the pandemic, special arrangements were also done by the authorities. At Ganga Sagar, a village on West Bengal's Sagar Island, drones were used to sprinkle water from river Ganges to encourage visitors to adhere to social distancing. तो पुण्य का जो पानी है वो यहाँ से पानी लाके इधर लाया गया है, उसको स्प्रे किया गया नदी के ऊपर. उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 50 आदमी से ज्यादा नहीं रहने दिया इधर. तो जो आदमी इधर खड़ा था वो चला गया, दूसरा बैच आएगा, इसलिए जो प्लेस है उसमें सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन है, 4 ड्रोन हमने यूज किया. In states like Punjab, Himachal Pradesh and in the capital New Delhi, the festival is celebrated as Lohri that commemorates the harvesting of the Rabi or winter crops and also marks the beginning of a new year for the Sikhs. The beats of drums and the inviting flames of a bonfire that defy the freezing winds marks the celebration of this auspicious occasion. As a part of the ritual, eatables such as dry fruits, popcorn, sesame seed and molasses are first thrown in the fire and later served to everyone, spreading abundance and happiness all around. लोहड़ी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में पंजाबियों का और बाकी सभी धर्मों का पवित्र त्यौहार माना जाता है और इस समय हम लोग तीसरी वेव से गुजर रहे हैं. मैं समझता हूँ कि लोहड़ी की अग्नि जो है वो पवित्रता का एक संदेश दे रही है. जहाँ हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का और वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं लोहड़ी के इस त्यौहार पे हम उस परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी इस अग्नि के अंदर इस बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द राख करे और सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली लाए. In western state of Gujarat, the festival is celebrated as Uttarayan, in which kite flying forms an important ritual. Hundreds of people gather on their rooftops to fly kites and even battle against each other for aerial supremacy. This year, to mark the occasion, the idols at the Swami Narayan temple in the state's Rajkot city were adorned with colorful kites. यहाँ हम आज आए हैं भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए. हम हर त्यौहार पे आते हैं. आज हमने एक अलग श्रृंगार देखा जो इस त्यौहार से मिलता जुलता है. पतंग का हमने ये भी देखा कि भगवान के हाथ में फिरकी रखी है. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हमारी जिंदगी की दौड़ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें अच्छे कार्य करके भगवान को खुश रखना चाहिए. In Tamil Nadu, Makar Sankranti is celebrated as Pongal. During the festival, women make beautiful rangolis, cook rice and milk in earthen pots and watch it overflowing.
After adding freshly harvested grains, it is offered to God's son, which is considered as a sign of abundance as it brings fortune to farmers' life. We are celebrating Pongal today, Thai Pongal. During this pandemic situation, we can't go to our friends' home and give the Pongal by preparing it. We can only celebrate by sending photos and messages to our friends. So be safe. Next year, at least next year, we must be celebrated by whole world will be celebrating this Pongal. Now, if you pan towards Northeastern India, the festival is observed as Bhogali Bihu, especially in Assam. During the occasion, people erect a traditional bonfire called mechi, a house made of straw, and burn it during the celebration. Various types of rice cakes and other sweets are also prepared during the festival. ये हमारे असम वासी लोग का असम का इसको भोगाली भी बोलते हैं। यहाँ सुबह उठ के हम लोग नहा धो के मतलब आके मिजी घर में आके पूजा करते हैं और मिजी घर जलाते हैं। फिर मतलब इसको फिर सभी लोग एक साथ भोज करते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का पकवान बनाया जाता है, पीठा बोलते हैं हम लोग। यहाँ असम में पीठा बोला जाता है। तो उसी के साथ और एक खास एक पकवान होता है उसको बोलता है कि मतलब टोपला भात। इस मतलब बिहू का एक खासियत है कि लोग टोपला भात बहुत खास मतलब शौक से खाते हैं। Makar Sankranti is not only a festival but also the symbol of life, which shows the incredible diversity of cultures and traditions in India. As entire nation welcomes the harvest season amidst the freezing temperatures and frosty nights and fog, this festival brings warmth of joy and happiness. India is a country where Sufism has not just flourished but has also become a way of integrating different religious communities. Even today, the teachings of these saints inform the lives of people and act as guidance force for many. Today, we will take you to one such shrine in Rohtak city of Haryana, which has been acting as a symbol of religious harmony for years. Situated in the Rohtak city of India's northern state of Haryana, the shrine of Bure Khan Baba has been serving as a cynosure of religious harmony for generations. Whether one is Hindu, Muslim or from any other religious community, the shrine is equally visited and revered by people of all faiths. बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे दिल की श्रद्धा होती है वैसे आते हैं। बाबा के दिन वीरवार के दिन आते हैं। बाबा की मान्यता रहती है, बाबा का आशीर्वाद रहता है, इसलिए आए वीरवार को आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। जिसके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, खुश हो रहते हैं, तो बाबा के दरबार पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा के चरणों में अपना मत्था रखते हैं और बाबा कृपा करते हैं। It's been said the saint fulfills the wishes of all and nobody returns empty-handed from here. Forming an integral part of public ethos for the last several centuries, even today the Sufi traditions play an important role in the lives of the people and connote them with an understanding of the world in all its spiritual dimensions. तो भगवान तो सबके लिए बराबर है ना, एक ही है भगवान। तो हम चर्च में भी जाते हैं, दरगाह में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाती हूँ, हर जगह जाते हैं हम। तो इंसान है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है, सब बराबर है। The way message of brotherhood and bond harmony comes out loud from these dargahs proves that the lesson of humanity and compassion that was once propagated by Sufi saints is still having its roots deeply embedded in the culture and traditions of the country. Now a roundup of some of the major stories that made news recently. A huge number of Hindu devotees bathed in holy rivers in India's northern Prayagraj city as they mark the beginning of Magh Mela, a festival celebrated in the Hindu month of Magh as per the Hindu calendar. Devotees in large number thronged Sangam, a confluence of rivers Ganga, Yamuna and mythical Saraswati to offer prayers at the fair. कोविड का सारा जो रिस्ट्रिक्शंस है या फिर जो भी कहा गया है कि मास्क पहनने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, तो अगर ऐसे करके लोग आए और मेंटेन करें सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्ट हो ही जाएगा।
The Magh Mela that begins every year in January is considered to be an auspicious time when devotees from across the country reach the fair to bathe in holy rivers, wash away sins and grant salvation from cycle of life and death. Bollywood actors announced the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2022 in India's showbiz capital, Mumbai. Panelists including veteran actor and host Annu Kapoor and actress Urvashi Rautela showed up and addressed a news conference as they announced the award. क्योंकि पॉपुलर जो आपके हीरो हीरोइन हैं उनको तो लाखों करोड़ों वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन जैसे लोगों को जो बहुत ही श्रम के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, जो प्रतिभाशाली हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका सदुपयोग हो, इसकी सार्थकता बनी रहे। Dada Saheb Phalke Award is considered India cinema's highest award in New Delhi. It is named after the father of Indian cinema, whose Raja Harishchandra was the first Indian movie released in 1913. A non-governmental organization in India's southern Bengaluru city is providing food to the attendants and relatives of patients who are coming from different parts of the country and staying outside hospitals. Founder of the NGO Roti Charity Trust, Syed Gulab has been serving meals to the poor for the past 6 years. 3-4 बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे मसला क्या है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे आते हैं एकदम गरीब तबका के लोग जो अपने इलाज के लिए आते हैं, तकरीबन 2 महीना 3 महीना रहते हैं आके, जो पैसा लेके आते हैं सारा बेचारों के पास में वो भी पैसा खत्म हो जाता है, कोई पैसा गांव से मंगाते हैं, अभी बेचारे एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम खाने के लिए पैसा नहीं रहता। अभी इसमें क्या किया हमने, 6 साल से तकरीबन सुबह में नाश्ता भी दे रहे थे, अभी हम दोपहर का भी खाना दे रहे थे, इसमें क्या है उन लोगों को सहूलत होगी। Earlier it was only breakfast, but Gulab has been able to arrange lunch as well for the attendants, with around 300 packets of food being prepared each day, even amid coronavirus pandemic. Till date, Gulab has been able to serve around 800,000 people. And now we will take you to Rajori district of Jammu and Kashmir, where the Urs of Al-Hajj Maulana Dil Muhammad Sahib brought together devotees of different faiths. Take a look. The shrine of Sufi Saint Al-Hajj Maulana Dil Muhammad Sahib, located in the Rajori district, is an abode of peace and tranquility. People cutting across all religious lines gathered at the shrine to attend the 9th Urs of the Holy Saint at his mausoleum. Men, women and children offered special prayers at the shrine and wished that the entire world copes up from the loss suffered due to COVID-19 pandemic and peace and tranquility prevails. इस साल कुछ अच्छे तरीके से वो अनोखे अंदाज में मनाया गया है। कोरोना वबा है और दीगर जो वबाएं इस वक्त ज़ोरों पर हैं, उनके ख़ात्मे के लिए दुआ की गई, मुल्क और मिल्लत के अमन और सलामती के लिए दुआएं की गई और आपस में अमन और भाईचारा की दुआएं की गई। यहाँ पर हर मज़हब का बंदा यहाँ पर आता है, उलमाए किराम की और सूफियाए इज़ाम की जो तालीमात हैं वो यही तालीमात हैं कि हर एक के साथ खंदा पेशानी से काम मिला जाए। Forming an integral part of the public ethos for the last 7 centuries, even today, the Sufi traditions play an important role in the lives of people and connote them with an understanding of the world in all its spiritual dimensions. To mark the occasion, priests and Sufi scholars gave sermons and perpetuated the teachings of the Sufi saint. हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे हज़रत आलमा मौलाना दिल मोहम्मद साहब का जो है उर्स मनाया गया है, जिसमें काफ़ी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई है और आपने देखा होगा कि दुआएं की गई हैं। यहाँ पे अमन सलामती की वबा से इलाका को पाक करने के लिए दुआएं की गई हैं, तो इसमें काफ़ी कसीर तादाद में लोग जो हैं शामिल होते हैं बगैर किसी मज़हब मिल्लत रंग व नस्ल। तो लंगर शरीफ का भी एहतमाम पूरा किया जाता है, जहाँ पे हज़ारों लोग जो है खाना खाते हैं। The Urs commemoration of the Sufi saint and the number of devotees coming to the shrine clearly indicates the lesson of humanity and compassion towards all religious communities are still having its roots deeply embedded in the culture and traditions of India. Moving on, next we move on to Jammu and Kashmir, where the administration is eyeing eco-tourism promotion. As the territory's beautiful mountainous landscapes and lush green forests have always enticed tourists
Forest Department has started a special training program for its employees to improve their hospitality skills and provide the best services to visitors. The COVID-19 pandemic has led many city dwellers to flock to rural areas to self-isolate around nature. This migration has come up as an opportunity for hilly areas to give boost to eco-tourism. And the Forest Department of Jammu and Kashmir is fully utilizing it. From identifying various spots to developing new trekking routes, the department is making every effort to promote eco-tourism. In this recent initiative, a special training program has been organized for its employees to cater to the demand of the tourists visiting the forest rest houses. Held under the supervision of the Indian Institute of Hotel Management or IHM Srinagar, the program is aimed at imparting a basic skill set to hospitality staff of the Forest Department. हमारे डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं उसमें स्टाफ को यहाँ भेजा इको टूरिज़म के लिए, ताकि जिस तरह टूरिज़म डिपार्टमेंट पे लोगों को हेल्प मिल रही है, जो गेस्ट्स जा रहे हैं उनको हेल्प मिल रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि हमारे हार्ट्स में भी वैसा होना चाहिए। जिस तरह वहाँ पे हमारे अच्छे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो हैं बड़े अच्छे हैं, उनमें काफ़ी पैसा लगा हुआ है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, अच्छा डेकोरेशन, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में सर कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस को ही कि में ही जाएँ, क्योंकि वो सर उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट ने भी हमें यहाँ सर भेजा, हम ट्रेनिंग करके यहाँ से वापस जाएंगे। The training session covered both theory and practical classes. Besides upgrading the skill set of the forest staff in the area of housekeeping, catering and front office management, the training also covered culinary skills including confectionaries and other local delicacies. From giving tips on chopping, peeling and grating to making the proper use of spices, attention was paid on every minute detail so that tourists can avail the best of services. देखिए फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, दे आर वॉचमैन्स एंड गार्ड्स, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस में जो ट्रेनिंग ये ले रहे हैं, वहाँ पे जो गेस्ट हाउस में वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, उनको ये सूटेबिलिटी और उनको जो बेस्ट कंफर्ट दे सकते हैं वो तब दे सकते हैं जब इनको एक ट्रेनिंग मिल जाए, हाउ टू द प्रोसेस ऑफ बेड मेकिंग एंड हाउ टू लर्न अबाउट नॉर्मल कुकिंग प्रोसीजर्स। तो इन सब से क्या होगा, दे आर वेल वर्ज, पर ये सीखने से ये अपडेटेड हो जाएंगे, और अपडेटेड होने से क्या होगा, कोई भी गेस्ट आएगा उसकी कंफर्टेबिलिटी लेवल हाई हो जाएगी, उसको अच्छा लगेगा वहाँ पे स्टे करना। Such initiatives being made to promote ecotourism will not just glorify the offbeat destinations along with their rich culture and traditions, but also bring a revolution in the tourism industry of Jammu and Kashmir. At last, we bring you a few short stories about the recent developments and happenings from around the world in our section of World in Focus. Fukushima Daiichi nuclear power station has to be inevitably discharge water into the sea, which is treated by advanced liquid processing system. Professor Tadashi Narbayashi is an expert of nuclear engineering who gave insights into the treatment and disposal of water. 溶融したデブリ等にですね触れることによっていろいろな核物質がですね地下水に溶け込んできてます。これらのものはですね科学的な処理をすることによってほぼ問題ないレベルまで取り除くことができてます。いろいろな膜を使ったり薬品処理をしたり、最終的にはこのアルプスという装置で処理をしました。このアルプスで処理したものを処理水というふうに呼んでおります。敷地の中にですね約1000基を超えるタンクがございまして、125万立方メーターの汚染水がございます。これは処理してあればトリチウム以外は取り除かれていると。このトリチウムなんですけども、例えばですねプールの中に目薬を一滴ポトンと落としたくらいのその濃さなんですね。The future of Fukushima power station is a matter of global concern. Therefore, decommissioning should be done carefully after referring to the opinions of experts and carefully considering all other similar cases around the world.
Hundreds of horses competed in a beauty pageant in the second edition of the Saudi Arabian Horse Festival, Ubaya in Diriyah. لما نشوف الاستضافة هذه وهالفعالية هذه على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي، الحضور ما شاء الله من جميع الأشكال والألوان، نساء ورجال، جميع الفئات السنية، اهتمام واضح من الحكومة لأن نكون رواد في هذا المجال، في مجال الخيل وفي مجال الجمال إن شاء الله. The beauty pageant, an international competition for pure breed Arabian horses Class B, is one of the activities of the festival. It offers various prizes in different competition categories totaling to 2 million Saudi riyals. Tokyo Electric Power Company is taking forward their plan to discharge ALPS, that is Advanced Liquid Processing System, treated water into the sea from Fukushima Daiichi Nuclear Power Station in the near future. The water contains tritium, which cannot be removed from the water. What effect does this water have on human body? Professor Narbayashi explains it. かぼちゃは硬い皮には放射能が少なくて、黄色くて美味しいところに放射能がたくさんあります。でこれは高感度の放射線検出器で、食べ物野菜をですね、切って撮影するとこういうふうになります。ですから私たちが日常食べている食べ物には放射性物質が含まれている。これによって私たちの体内は、成人男子でだいたい7000ベクレルくらいの放射能を体内に持っています。でこのくらいの非常に微弱な放射能になりますと、がんにはならない。放射線の影響っていうのはもう濃度に依存してきますから、そういう意味では他の各種の影響は、ほぼ除くことができて、トリチウムの影響だけを考えればいいという状況に、処理水の段階ではできるというふうに判断をしています。今の自然界にあるトリチウムの総量と比べれば、やっぱり3桁4桁低い量のトリチウムを放出するかどうかという判断を我々はしたというふうに理解をしています。体の中のトリチウムの量がこの放出によって変わるということは起こり得ないということで、生態的な影響もこのレベルであれば考えられないというふうに理解できるかと思います。日本人の男性の場合、発がん原因の3割がタバコ、1割がお酒ということになるんですが、例えばですね、毎日タバコ1箱を吸うような方、あるいは毎日3合お酒をたしなまれるような方、この方々は1000ミリシーベルトから2000ミリシーベルト近く被爆していることに相当します。一瞬の被爆としては100ミリシーベルト、原発に事故による被爆のような感情な場合だと200ミリシーベルトくらいにならないと、がんが増えてくるというデータはないということが分かっています。The three experts argue that discharging ALPS treated water into the sea is safe. The correct path toward decommissioning is establishing mutual understanding among stakeholders to impart correct knowledge regarding waste management. After almost 8 years of being looked after, 43 giant turtles were released into the wild in the Galapagos Islands. The turtles from the Chalonris guntheri species were born and raised in the Arnaldo Topeza breeding centers in Isabela Island. Para lograr repatriar un grupo como las 43 que se liberaron la semana pasada, ha pasado un proceso de al menos 8 años. ¿Qué implica esto? Traer los reproductores al cautiverio, mantenerlos en grupos de hembras y machos. Una vez que han copulado y anidan, colectar esos huevos, ponerlos en incubadores a 28 grados para obtener machos y 29.5 grados para obtener hembras, mantenerlos durante 120 días. Una vez que nacen las tortuguitas, mantener un cuidado diario que implica estar pendientes tanto de su salud como de su alimentación. Ranging from 5 to 7 years of age, each turtle underwent blood tests and a quarantine period to ensure optimal health before being released according to Ecuador Environment Ministry.
After leaving the breeding center, the animals were airlifted by helicopter into their new habitat near the Sierra Negra volcano, home to 4 giant turtle populations. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@nin.com. I'm your host, Skyrim Zimic, and it's goodbye from the entire production team.